Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर what we are going to do, we are going to solve the past paper questions, or we can say the expected questions from the topic that is called internet communications. Along with internet communications, beta, we are also going to look into packet switching versus circuit switching as well. And in topics के अंदर हमारे पास बिट टॉरेंट का प्रोटोकॉल भी इंक्लूडेड है. सो वी आर गोइंग टू सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी बच्चों पहले क्वेश्चन के अंदर बता रहे, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो ये बता रहे कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो किस लेयर के ऊपर होता है. तो बच्चों वी नो दैट दिस प्रोटोकॉल रन्स ऑन द लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर. अच्छा, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मैंने पूरे जो सिलेबस का कंटेंट है तो उसमें से कोई टॉपिक मैंने मिस नहीं करा है. हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन मैंने जरूर इंक्लूड करा है ताकि आप लोग का रिवीजन भी ऑटोमेटिकली उस टॉपिक का हो जाए. आईपी, सो फॉर आईपी वी हैव इंटरनेट प्रोटोकॉल और वी कैन से इंटरनेट लेयर. एंड एसएमटीपी बच्चों आपके पास रन होता है ऑन एप्लीकेशन लेयर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, you just need to tick the following: shared bandwidth, either it's circuit switching or it's packet switching. So बच्चों bandwidth कौन share करता है आपके साथ? Packet switching, because in circuit switching we are having dedicated bandwidth available. Data may arrive out of order, so that is also in packet switching. Data can be corrupted. So बच्चों corrupt तो आपके पास data दोनों में हो सकता है. Either it can be corrupted in circuit switching or it can be also corrupted in packet switching as well. Data are less likely to get lost. So I think that is, although data loss बच्चों दोनों के अंदर हो सकता है, but less likely in circuit switching के अंदर आपके पास data is less likely to be lost. Moving forward, another question. अच्छा जी, अब इस सवाल में बोल रहे बच्चों, you just need to state 3 functions of TCP part of this protocol. He is talking about TCP/IP protocol suite. So इसमें से बोल रहे TCP protocol का functionality आप लोग को यहाँ पे बतानी है. You need to mention the functionality of TCP part. तो टीसीपी पार्ट के बच्चों बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे पास. द मेन फंक्शन इज एस्टैब्लिश एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सेशन फर्दर. अनदर थिंग बच्चों जो आपके पास ये टीसीपी प्रोटोकॉल करता है, ऐड पैकेट सीक्वेंस नंबर टू द पैकेट हेडर. ऑल्सो एक मेजर बच्चों रोल है रीट्रांसमिट the packets lost during ट्रांसमिशन. इसके अलावा और भी बच्चों बहुत सारे रूल होते हैं हमारे पास टीसीपी वाले पार्ट के. लाइक इट ऑल्सो रीअसेंबल द पैकेट्स इनटू देयर करेक्ट ऑर्डर. ऑल्सो डिटेक्ट के कौन कौन से पैकेट आप लोग के मिस हुए में, आपके डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक करना. So these are the other functions of TCP part.
नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों वो बोल रहे दो फंक्शन बता दो ऑफ आईपी वाला पोर्शन ऑफ दिस प्रोटोकॉल. सो आईपी वाले पोर्शन के अंदर बच्चों the main stuff of this protocol is add source and destination IP addresses. आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन का बच्चों आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है. फर्दर encapsulates data into datagram. तो आपके पैकेट्स को डेटाग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है आईपी वाला पार्ट. फर्दर और भी इसके मल्टीपल फंक्शंस है लाइक इट ट्रांसफर्स डाटा फ्रॉम इंटरनेट लेयर टू नेटवर्क लेयर. आपके डाटा को पास करता है. आपके पैकेट्स को राउट करवाता है बच्चों इन द नेटवर्क बिकॉज ऑफ दैट कनेक्ट आईपी एड्रेसेस. ठीक है. सो आप लोग मल्टीपल बातें यहाँ पे लिख सकते हैं. जो मेजर पॉइंट है जो मैं लिखता है एग्जाम के अंदर वो मैंने आपके सामने लिख दिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब ये बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई वन अदर प्रोटोकॉल that could be used to transfer files across the college network. So we have many protocols that can be used to transfer the files. Like we can use FTP, that is file transfer protocol. Moving forward, अब बच्चों बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे आप लोग को क्या करने मेंशन करने. So the first thing is application layer. The protocol that we are going to write will be, okay, we have a question. Sir, datagram. Datagram मतलब पैकेट्स की एक फॉर्म है. पैकेट्स की एक फॉर्म को हम लोग डेटाग्राम भी कहते हैं. इट्स अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स. So you can use the vocabulary datagram or you can use this vocabulary. So अगर आप पैकेट्स की vocabulary भी यूज कर ले that's totally fine. कोई इशू की बात नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड एप्लीकेशन लेयर पे बच्चों प्रोटोकॉल मेंशन करना है हमें यहाँ पे. सो द प्रोटोकॉल दैट आई लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने मेंशन कर दिया द प्रोटोकॉल that can be used is UDP, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल. और इंटरनेट लेयर के ऊपर तो बच्चों एक ही प्रोटोकॉल आप लोग को पढ़ाया गया है, दैट इज आईपी प्रोटोकॉल. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब okay, another question. Yes, HTTP is not a layer, Ali. It's a protocol. Okay, examiner is asking you, बच्चों, 4 layers of TCP/IP protocol. So simply mention कर दे भाई. The first layer is application layer. Another layer is transport layer. Another layer is internet layer. Another layer is network access layer. Yeah, you can also name this layer as data link layer. Both names are accepted. आगे बता रहे बच्चों, TCP/IP protocol suite is responsible for transmitting data across the internet using
packet switching. Explain why packet switching is used when sending data across internet. So explain why packet switching is used. तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि in packet switching for every packet we choose the best possible path. Alternative routes are available. It's more secure and packets can travel through same or different paths as well. They may arrive, खैर 2 नंबर का सवाल है, मैंने काफी डिटेल मेंशन कर दी, चले कोई बात नहीं. They may arrive out of order as well. So packets can arrive बच्चों out of order as well. Now moving forward, each packet requires a header. Describe the purpose of packet header. पैकेट हेडर का बच्चों वो बोल रहा है कि पर्पस बता दो. तो पैकेट हेडर का बच्चों मेन एम क्या होता है? पैकेट्स शुड अराइव एट करेक्ट destination if any packet is lost, so it can be recalled and whole data can be reconstructed into proper order. Further बच्चों ये बता रहा है identify three items that should be contained in a packet header. Packet header में बोल रहे 3 आइटम कोई भी बता दो. So we have source IP address, we have destination IP address, we have packet sequence number कि किस सीक्वेंस के अंदर उसको रीअरेंज करना है, पैकेट सीक्वेंस नंबर, we have packet length, we have destination port as well, we have protocol that is being used. बहुत सारी चीजें होती हैं. Protocol used, we have IP version as well. कौन सा वर्जन यूज हो रहा है IP का?
सो कोई भी 3 बच्चों आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। प्रोटोकॉल यूज्ड, डेस्टिनेशन का पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, सोर्स आईपी एड्रेस। सो यू कैन राइट एनी ऑफ द 3 आइटम्स जो भी आपके माइंड में आए। इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर क्वेश्चन। Okay, an email is being sent from one email server to another using packet switching. State 2 items contained in an email packet apart from the data. So email के पैकेट में बच्चों 2 आइटम बोल रहे, बता दो। बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल बता दें, सोर्स आईपी एड्रेस, और सोर्स किसका होगा? ऑफ कोर्स ऑफ सेंडर, एंड destination IP address of receiver. Further, it can contain packet sequence number, it can contain checksum as well. So कोई भी आप लोग यहाँ पे 2 मेंशन कर सकते हैं। Okay, we have 2 things. 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तमीमा। सर, शॉर्ट पैकेट स्विचिंग में पूरी सर्किट स्विचिंग डिफाइन करनी है ना? शॉर्ट पैकेट स्विचिंग, तमीमा मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा जी, हसन बोले सर, क्विक आफ्टर दिस क्वेश्चन कैन वी हैव क्विक रिवीजन ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स एंड के मैप्स? हसन, दैट इज फॉर द थर्ड सेशन। थर्ड सेशन जो है वो इसी के ऊपर है, बूलियन अलजेब्रा, करनाफ मैप, लॉजिक गेट्स। सो थर्ड सेशन के अंदर हम लोग ये, मैं अगला जो दैट विल बी ऑन संडे। सो संडे वाले सेशन के अंदर मैं ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक के करवाऊंगा। मैंने आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करी थी आई गेस। तो थर्ड सेशन के अंदर वो टॉपिक्स मैं कवर अप करवाऊंगा आपको, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों। एक्सप्लेन द रोल ऑफ राउटर्स in sending an email from one email server to another. अब बच्चों यहाँ पे आप लोग को, सर आई मीन सर्किट स्विचिंग का प्रोसेस सेम एज पैकेट स्विचिंग? नो, इट्स अ टोटल डिफरेंट प्रोसेस। अभी आगे क्वेश्चन आते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ राउटर्स whenever you want to send an email from one email server to another email server. So हमें राउटर बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं। सो ईमेल विल बी, email will be split into packets will be assigned packet header number along with destination IP address. Routers will choose the best path for every packet with the help of
routing table. Packets will be rearranged at destination to obtain email. So this is how the routers are going to play their role whenever we want to transfer the data. अच्छा जी, in the next part बच्चों बोल रहे in sending an email message, an appropriate use of packet switching. Explain why this is the case. वो बोले email send करने के ऊपर packet switching ज्यादा बेहतर है as compared to circuit switching. So why this is the reason? So one of the reason बच्चों, more secure because every packet will take a different route. Packets may arrive out of order because that's not an issue. Time delay is also does not matter a lot. तो ईमेल थोड़ी देर आ जाए, थोड़ी देर में आ जाए तो कोई इश्यू की बात नहीं होती, ठीक है? So these are the reasons that packet switching is better in whenever you want to send an email. Packet switching is not always appropriate. इसका एक alternative नाम बताने तो बच्चों, you people know the name, that is called circuit switching. Moving forward, okay, name an application for which the method identified in part B is an appropriate and justify your answer. So बच्चों, application आप लोग को पता है, real time streaming, any video conference, so यहाँ पे circuit switching is better. और मैंने यहाँ पे आप लोग को explain भी कर दिया the reason के we have, अब वो benefit बता दें circuit switching, we have dedicated full bandwidth available or no delay, since full bandwidth is available, all packets travel along the same path. So I think these justifications are more than enough.
And you can add one more point. Quality of service is much better as compared to packet switching. So this was the question बच्चों that we solved about packet और circuit switching. एक सवाल था, अच्छा सवाल था. Okay, moving forward, we have another question यहाँ पे. और अगेन एक वो पुराना सवाल बच्चों ये आप लोग को कंप्लीट करना है. आई टोल्ड यू पीपल के ये सवाल 7-8 टाइम्स आपका एग्जामिनर पूछ चुका है इन रीसेंट 5 years. तो एप्लीकेशन लेयर, अनदर लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, another layer is internet layer, another layer is data link layer, or you can also write network layer as well. In the next part, state network model that is being used in BitTorrent protocol. So you people should know it's a peer-to-peer network. Moving forward, state the use of BitTorrent used for file sharing purpose. Explain how the exchange of data is achieved using BitTorrent. So you need to explain the process of BitTorrent. 4 marks का question है. Let me explain. Torrent descriptor file is made available. File is splitted into packets. BitTorrent software make that file available to users. A system can download and even share the file with others at the same time. Leechers, yeah, we call it leeches, are systems that download more but shares
less. Central system, that is called the tracker, keep record that is called tracker, keep record for of all pairs. So that they can pause and restart any time. So this is how बच्चों we achieve the exchange of file data in BitTorrent protocol. Moving forward, अगला सवाल, state two additional protocols that can be used in application layer. So application layer के बच्चों कोई भी दो प्रोटोकॉल बता दें. Simple mail transfer protocol. And why this protocol is used? Used for sending emails. Another protocol बच्चों कोई भी नाम बता दो. FTP, file transfer protocol, used for sending files. Other protocols can be POP3, IMAP, HTTP, used for transfer of web pages from web server to the client. So कोई भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स मेंशन कर सकते थे. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल आया हमारे पास यहाँ पे. माल वैसे तो आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू पीपल, जिस तरह लास्ट टाइम की थी, तो इस बार भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा. अगर आपको देखना फिर भी देख लो. ठीक है. अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन बच्चों, बड़ा सिंपल से सा क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स. लेट्स सी. ईमेल क्लाइंट डाउनलोड्स एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर. ईमेल डाउनलोड कर रहा हूं मतलब रिसीव कर रहा हूं ईमेल, दैट इज POP3. email is transferred from one email server to another email server. So email send karna, that is SMTP. Email client send an email, client sends an email. Send कर रहे हो तो बच्चों SMTP. Browser send a request, so that will be HTTP या HTTPS. Downloading a file can use a client server model. Alternative model आप लोग को बताने तो बच्चों, this model is peer-to-peer model. अच्छा जी, बोल रहे एक्सप्लेन ट्रैकर. ट्रैकर क्या होता है? इट्स अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर. 2 नंबर है. ओ माय गॉड. सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कीपिंग record for all other systems on
network. Tracker stores details of other computers that have all or part of that file. Then we have bachcho seed, a system having %100 of, ये परसेंट साइन अच्छा नहीं लग रहा, 100% of the file available and uploading the content as well. And let's talk about SWARM as well. All connected peer systems are called SWARM. They have part of the file, can have complete file as well. So एक अच्छा सा बच्चों मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया बिट टॉरेंट की चीजों को, और ये सब थियोरेटिकल चैप्टर है, आप लोग को सारी थ्योरी पता होनी चाहिए. अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड. कितने सवाल बचे? अरे बहुत सारे सवाल ऐड कर दिए भाई मैंने. अच्छा, मैंने वर्चुअल मशीन के भी सवाल ऐड किए हैं, वो भी करते हैं, इसके बाद वर्चुअल मशीन के ऊपर मूव करते हैं. ओके तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. अब आप लोग को बताना है कि कनेक्टिंग करेक्ट राउटिंग किसका पार्ट है? आईपी का पार्ट होगा ऑफ कोर्स राउटिंग. होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन टीसीपी का पार्ट है. कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, so that is the part of IP. Retransmission TCP का पार्ट है. रीअसेंबलिंग TCP का पार्ट है. ठीक है, 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है फॉर दिस क्वेश्चन. स्टेट टू अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, स्टेट यूज ऑफ ईच प्रोटोकॉल. सो कोई भी नाम बता दें, अब कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स राइट डाउन. POP3 uses receiving emails. Another protocol can be SMTP, FTP. Let's write down HTTP this time. HTTP or HTTPS. Transfer of web pages from server to client. ठीक है भाई. Name, state and name TCP layer, IP layer that uses IP address. So that is internet layer. Email
are transmitted across the internet using the packet switching and routing tables. Give 4 items of data in an IP data packet. So वही पुराना सवाल बच्चों, अगेन आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास एक आईपी एड्रेस के आईपी के पैकेट के अंदर. वी हैव checksum, we have source IP address, we have destination IP address, we have और क्या होता है we have protocol that is being used, we have size, total length of the packet, we have packet sequence number, we have data. So you can write any 4 over here. 2 benefits of using packet switching. So अपनी वर्डिंग में इसको बच्चों थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देगा. Alternative routes are available for packets. Another benefit of using packet switching is missing packets are retransmitted. Identify 2 items of data stored in routing table. अब ये बोल रहे बच्चों राउटिंग टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इज हर नेटवर्क की आईपी स्टोर्ड होती है यहाँ पे. सो नेटवर्क आईपी एड्रेस इज बीइंग स्टोर्ड. You have routing metrics are being stored like hop count, latency between the paths, between the networks. ठीक है. सो ये सारा इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, गेटवे अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है. सो इसी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं द बेस्ट पॉसिबल पाथ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अभी अगला सवाल अगेन सर्किट स्विचिंग का है. यू कैन एक्सप्लेन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग. आप लोग अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. नाउ अब जरा वर्चुअल मशीन के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं. यहाँ पे सर पैकेट स्विचिंग इज फास्टर राइट बिकॉज अवॉइड्स कंजेशंस. नो, नॉट एट ऑल जाजिब. अगर फास्टर की डेटा ट्रांसमिशन की बात करोगे तो सर्किट स्विचिंग इज मच बेटर. सर ऐसा क्यों? बिकॉज सर्किट स्विचिंग के अंदर यू आर हैविंग द फुल बैंडविड्थ अवेलेबल. कोई बीच में कोई और नहीं आएगा आपके पास. पैकेट में तो डिले हो सकता है, नेटवर्क कंजेशन हो सकती है बिकॉज वी हैव ऑल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल, बट स्टिल उसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर टाइम लग सकता है. लेकिन सर्किट स्विचिंग के अंदर स्ट्रेट फुल पाथ अवेलेबल है. आप जितना डाटा आप ट्रेवल करवा सकते हो आप करवाओ. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
Okay, before we move forward, a question is, sir, can packets receive in sequence also justify circuit switching being faster? हाँ बिल्कुल, अगर आपका पैकेट सीक्वेंस के अंदर भी रिसीव हो रहे हैं तो सर्किट स्विचिंग ही फास्टर रहेगी आपके पास, बिकॉज देयर इज अ चांस के अभी तो हो रहा है, लेकिन भी हम लोग जो सिनेरियो देखते हैं, हम जनरल बात करते हैं, तो जनरली हमारे पास हमेशा पैकेट सीक्वेंस के अंदर रिसीव नहीं होते। ठीक है, तो हम एक जनरल बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी बच्चों, वीएम का क्वेश्चन है, वर्चुअल मशीन का क्वेश्चन है। वन ऑफ आवर स्टूडेंट उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर वीएम के क्वेश्चंस भी जरा करवा देगा, तो वी हैव अ क्वेश्चन। वर्चुअल मशीन इज अ डैश। वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स एक सॉफ्टवेयर होता है आपके पास। सो वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट emulates a dash computer, that emulates a physical computer system. Virtual machine allows multiple guest operating systems. I think ये क्वेश्चन मैंने शायद दिया था। Operating system to run on one computer using a host operating system. 4 marks. Moving forward, another question बच्चों यहाँ पे। अच्छा जी, ये पता नहीं कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है डेटा भाई, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ 4 operating systems. Operating system 1, 2, 3, 4 shown in the diagram. 1, 2, 3 and 4. तो बच्चों सिंपल है, रोल एक्सप्लेन करना है। आपको खुद पता है ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, गेस्ट, और ये क्या होगा, होस्ट। ठीक है ना। सो इनका पर्पस बता दें यहाँ पे। ओके, लेट मी रीशेयर। ठीक हो गया। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम 1, operating system 2 and operating system 3 are guest operating systems while, ये चले इसी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इंस्टॉल्ड on virtual machine while operating system 4 is host operating system that help in running guest OS. Describe the role of virtual machine software in the testing of my app. ये रहा my app, ये रहा my app, my app.
अच्छा जी, माई ऐप क्या है बच्चों? एक एप्लीकेशन है दैट इज रनिंग ऑन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रन हो रहा है? वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा है। और वर्चुअल मशीन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, जो आपका एक्चुअल हार्डवेयर एक्सेस कर रही है। ठीक है, सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीएम इन टेस्टिंग ऑफ माई ऐप। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम क्रिएट कर रहा है बिटवीन द गेस्ट ओएस एंड द होस्ट ओएस। used to communicate between guest OS and host OS. My app request to guest OS which request to virtual machine and virtual machine communicates with host operating system. So I think that's more than fine for 3 marks. Explain one benefit and one drawback of this approach to test my app. तो बच्चों, आप लोगों को क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर रहेगा, आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टक हो जाएगा और आपका डाटा लॉस नहीं होगा, कंप्यूटर सही रहेगा। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि आप फुल कैपेबिलिटी के अंदर आप लोग टेस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके पास 8 GB रैम है तो 8 GB रैम आप टोटल इस ऐप को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट बैंडविड्थ विल बी डिवाइडेड हियर 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 हियर। तो वो डिवाइडेड बैंडविड्थ, आपको फुल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो दैट्स द डिसएडवांटेज। तो ये वर्डिंग की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। मल्टीपल operating systems can be used for testing purpose using the same machine. And the drawback can be full resources are not available. Also, yeah, full resources are not available. That's why we
cannot make judgments about the response time. So this was one of the question बच्चों of a virtual machine that we have. We have few questions. Let me answer those questions. सर ये समझ में नहीं आया, फिर एक दफा एक्सप्लेन कर दे. ओके फाइन. देखिए ये एक एप्लीकेशन है टेस्टिंग माय ऐप. ये एप्लीकेशन कहाँ पे बनी है? हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने बनाई है. गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कहाँ पे लोड करा है? सर वर्चुअल मशीन में बनाया हम लोगों ने. अब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड माई ऐप. अब मैंने यहाँ पे मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया. यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया अपना एप्लीकेशन. यहाँ पे मैंने विंडोज कर दी, यहाँ पे भी मैंने चेक कर ली. यहाँ पे मैंने लिनक्स कर दी, लिनक्स में भी अपनी ये मैंने ऐप चेक कर लिया कि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये बिल्कुल प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा. दैट्स द बेनिफिट दैट वी हैव. मशीन एक ही है, हार्डवेयर एक ही है आपका, और आपको तीनों एनवायरनमेंट के अंदर आपने अपनी टेस्टिंग अप्लाई कर ली. तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव. अनदर बेनिफिट कैन बी के अगर आपका सिस्टम क्रैश कर, आप टेस्ट कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर हैंग होगा एंड आपके ओवरऑल कोई डाटा लॉस नहीं होगा, कोई आपका सिस्टम करप्ट नहीं होगा. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट दैट वी हैव. ड्रॉबैक के अंदर मैंने लिखवाया कि ऑफ कोर्स अब देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज आर बीइंग डिवाइडेड. कुछ रिसोर्सेज इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है. सो सारी रिसोर्सेज आपके पास डिवाइडेड है. सो फुल रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज. सो दैट्स one of the drawbacks that we have. Full resources are not available. That's why we cannot make judgments about the response time. तो हम ये जजमेंट नहीं कर सकते कि हमारे एप्लीकेशन जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं दैट इज माय ऐप, तो इसका रिस्पांस टाइम कैसा होगा जब इसके ऊपर लोड डालेंगे या फुल लोड के ऊपर काम करवाएंगे, तो इसका रिस्पांस टाइम के ऊपर हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते. तो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स दैट वी हैव. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चन बच्चों. एक वर्चुअल मशीन का क्वेश्चन करवाया मैंने आप लोग को 2, और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और इंटरनेट कम्युनिकेशन के क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म करें. सो आई थिंक दैट्स इट. इन चैप्टर्स में से यही मेरे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन. आज इसको यही तक होल्ड करेंगे. जो फर्दर 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेगा. यू कैन सी द मार्किंग स्कीम्स, उसको भी थोड़ा रीड आउट किया करें ताकि आप लोग को आंसर लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाए. अगली क्लास के अंदर हम लोग बूलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे. एंड मुझे काफी बच्चों ने बोला हुआ था कि सर इसकी क्वेश्चन थोड़े और प्रैक्टिस करवा देगा. तो हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस हर टॉपिक के परफॉर्म करेंगे. पहले बूलियन अलजेब्रा की कर लेंगे, then we can solve 3-4 questions of Karnaugh maps, then we can solve 3-4 questions of adders, and then we can also solve 3-4 questions of क्या बचा हमारे पास फ्लिप फ्लॉप as well. तो फ्लिप फ्लॉप के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग Karnaugh मैप के कर लेंगे. सो या तो मैं इस सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और एक सेशन के अंदर मैं के मैप और बूलियन अलजेब्रा कवर अप करवा दूंगा और एडर्स, और अगले सेशन के अंदर मैं फ्लिप फ्लॉप और कोई उसके साथ एक और फर्दर टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर अप कर लेंगे. ठीक है. सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों. इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे ऑन संडे इंशाल्लाह. आज इसके अलावा भी आप लोग के जो क्वेश्चन हो, कोई जो क्वायरीज हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. नहीं फातिमा बेटा, नो नीड टू वरी अबाउट द फुटनोट्स, उसकी प्रैक्टिस भी मैं अच्छी करवा दूंगा आप लोगों को. नो नीड टू वरी अबाउट. ठीक है. चलें, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.